Hi everyone, this is the lecture 8 for the chapter Laws of Motion. In the previous lecture, we discussed about the contact forces, that is the friction force, and after that, we also went to the rolling friction. That is, we discussed there were three types: the static friction, the kinetic friction, and the rolling friction. Then we came to the circular motion, that is, when a body is moving in a circle, then it needs the centripetal force to move in that circular motion. Okay, so that centripetal force has to be provided by some or the other kind of forces which are present in that system to continue that motion. Otherwise, the body, it may either slip away from the center and fall down. And we were not able to discuss any problems that day, but in this lecture, we will also discuss the problems related to circular motion. Before that, I would like to before that I would like to teach you how to solve the problems in mechanics, because see, it seems very easy when at first when a problem comes to your when you read the problem, it seems very easy, but actually the problem has many the problems which are related in this which are related to this chapter in these laws of motion. They are not the single body problems. You will get the problems in which there are more than two bodies. There are springs, there are strings. The tension in the string is also included. Then the problems related to circular motion, inclined plane, and etc. etc. The law of conservation of momentum, impulse. So all these problems, they can be combined, like all these concepts, they can be combined into several types of problems and given to you. So you must be aware of a proper technique that should be used while solving these kind of problems. So today I am going to give you certain steps, and I'll explain you that why are we doing this. So let's start the lecture. So today is a general class. I am not discussing any specific topic. We'll just discuss that how to properly, like technically solve the problems using the various steps. So see, as I told you, the problems in mechanics, they are not single body problems. You will get different bodies. So you have to consider the like that complete set of bodies as an assembly. ठीक है? So that वो जो पूरा system आपको दिया होगा, that is a assembly जिसमें कि different different parts हैं. So your first step will be you need to draw a diagram which is showing the parts of that assembly. Okay, parts of assembly mean you have to draw the complete diagram. जितना जितना चीजें क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है, कोई भी कंपोनेंट आपको छोड़ना नहीं है. You have to draw the complete diagram. Now the second step comes, we have to choose one part of that assembly as your system. Then you have to draw a separate diagram which is showing all the forces on the system by the remaining part of the assembly. And this separate diagram that you will include, that is known as a free body diagram. It's a very common word which is used in physics and mechanics problems. So this is free body diagram. Then what you have to do, when you have got one body diagram, drawn one free body diagram, you have to write down the equations which are arising out of that diagram using the Newton's second laws, right? See, one important thing you have to remember in the third step is that when you draw the free body diagram of any body, you have to just be careful that you have to include all the forces that are acting on that body, on that system. Okay, you don't have to include any forces that the system, that the environment, that are acting on the environment by the system. मतलब in simple terms, जो सिस्टम है हमारा, जो भी बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, दो टाइप के फोर्सेस होंगे. कुछ फोर्सेस उस सिस्टम पर लग रहे होंगे और कुछ फोर्सेस वो सिस्टम बाकी दूसरे सिस्टम पे लगा रहा होगा. ठीक है, तो दो फोर्सेस हैं. सम फोर्सेस विल बी एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम
and some other forces they would be applied by the system on the remaining part of the assembly. तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें सिर्फ वो फोर्सेस कंसीडर करने होते हैं जो कि उस सिस्टम पे लग रहे हों, मतलब विच आर एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम, ठीक है। तो अभी it might seem confusing at first, but when we start doing the problems related to friction and all, those complex type of problems also, you will be able to understand that what kind of forces I am talking about. Okay, so we'll see this concept in the problems also. Now we have to write down the equations using the Newton's second law of motion. Second law of motion says mathematically F is equals to ma. So what we have to do is when we have drawn one free body diagram, so we will see the acceleration of that body, right? That acceleration will be a. Okay, we know the mass of that body, that is m. So this ma we know. We have to think about this f. This f in the Newton's second law of motion, we talked about that it is not a single force. This f it consists of the multiple forces. That is, this f जो है इसमें खूब सारे फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं, then this f in this law it refers to the resultant force, right, or the net force. ठीक है, तो जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, हमें क्या करना है, एक तरफ हमें एम ए रखना है जो कि एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स एफ के बराबर होता है। दूसरा काम हमें क्या करना है, इक्वेशन का दूसरे तरफ on the other side of the equation we will just write down all the forces that are acting on that body, ठीक है, using the proper signs। प्लस और माइनस का ध्यान हमें रखना है, वो हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि हमें एफ कैसे लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द वे एक्चुअली टू राइट डाउन द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और हाँ, और ये चीज हम लाइक if the forces they are directed only in one direction, तो हम लोग तो लाइक नॉर्मली वी कैन राइट इट इन दैट डायरेक्शन ओनली, बट ऐसा क्वेश्चन में जनरली नहीं होता है। सो देर आर टू डायरेक्शंस कंसर्न्ड, x and y direction, so we have to resolve all the forces in x and y direction, and then we have to write down the equations in both these directions। मतलब x डायरेक्शन की जो इक्वेशन होगी वो अलग लिखेंगे, y डायरेक्शन की जो इक्वेशन होगी वो अलग लिखेंगे, यूजिंग दिस सेम कॉन्सेप्ट f इज इक्वल टू ma। तो ये ऐसे नहीं लिखना है, हमें x के लिए अलग लिखना है और y के लिए अलग लिखना है, राइट। नाउ we have got the free body diagram for one system or for one body. We have got the equations. Now we have to similarly we have to consider the other parts of the assembly as well, and we have to first draw their separate diagrams, free body diagrams properly, resolve the components जो भी actual x और y direction में नहीं है उन्हें resolve करेंगे पहले, and then we will write down the equations using the second law of motion for all of the systems that can be formed from that assembly. Okay, जब हमारे पास सारे systems की equations आ जाएंगे, then we will see कि how many variables are there and how many equations are there. That is, the number of equations and the number of variables, they should be equal. Okay, then only we can find out all the values, like all the variables, तभी हम लोग निकाल सकते हैं ना, इसलिए हाँ। and one, so when you are when you are done with all of the bodies, then you will check the number of variables and number of equations, and then you will find you will just go on to like eliminate one variable, or if there are generally two variables, then you can eliminate one and find out the value of the another. If there are more than one, then you can solve these equations simultaneously. There are so many numerical ways to do this. Okay. So also one thing you must remember here, you have to include the action-reaction pairs, which we referred to in the Newton's third law of motion, because these are the forces that generally people they forget about. Okay, so we have to draw the action-reaction pairs. We refer to these in the Newton's third law. Okay, so what we talked about in the Newton's third law, it was
that to every action there is a equal and opposite reaction. Okay. So we also discussed this in detail that if there it is applicable when there are two bodies in contact. ठीक है तो हाँ not in contact also like we also discussed one example related to gravity but जरूरी नहीं है contact में हो but दो bodies का होना जरूरी है ठीक है एक्शन और रिएक्शन पेयर होने के लिए तो सपोज ये दो बॉडीज हैं they are in contact this is A and this is B so if A is applying some force on B then same force would be applied on A by B यही बोलता है ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि we discussed that FAB is the force which is applied on A by B which is always be equal to FBA FAB अकेले exist नहीं करेगा there are always the forces they are always in pairs ठीक है अगर contact forces हैं तो they are always in pairs the force which is applied on one body by the another body will always be equal in magnitude and opposite in direction to the force which is applied by another body on the first one. So that means FAB is equals to FBA. So we'll see this also in the example. I have some good examples, some good problems. So you have to include the action reaction pairs and this is all I mean these are only the important points that you have to remember while doing the questions okay and rest of the things you will get to know when we solve actual problems so this is all the things that you must keep in mind so now let's simply jump on to the problems because I think we have not discussed any problems any proper problems till now after the law of conservation of momentum so without the problems, I mean, all these concepts, they are just useless, no? So first today, because in the previous lecture we discussed the circular motion, right? So first, I'll discuss the problems related to circular motion. So question number one says, a cyclist speeding at 18 kilometer per hour on a level road मतलब flat road. बैंक नहीं है जैसे हमने बैंक रोड के बारे में भी लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट द बैंक रोड्स आल्सो व्हिच वर इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ये वैसा रोड नहीं है ये फ्लैट रोड है जैसे हमारे एक्चुअल में रोड्स होते हैं टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर without reducing his speed and the coefficient of static friction between the tires of his cycle and the road is given to be 0.1. The question asks, will the cyclist slip while taking that turn? So that's a very practical question जो like हम इसे प्रैक्टिकली भी समझेंगे ना तो हमें समझ में क्लियर हो जाएगा समझ में आ जाएगा तो सी पहली बात तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर इज कि अ सर्कुलर टर्न और उसका रेडियस दिया हुआ है 3 मीटर तो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन सी रेडियस होगा तो इसका मतलब है सर्कल होगा ना तभी तो रेडियस होगा लेकिन रोड्स में ऐसा सर्कल थोड़ी होता है रोड्स तो कुछ भी होती है ना पहले ऐसे थोड़े रोज टर्न हो गई ठीक है तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि देयर इज अ सर्कुलर टर्न मतलब मान लो ऐसा करके रोड्स सीधी थोड़ी होती हैं कुछ ना कुछ टर्न पे ही होती है ना बहुत कम सीधी होती है तो मान लो टर्न ऐसा है ठीक है जरूरी नहीं है कि वो पूरा सर्कल हो ऑब्वियसली पूरा सर्कल नहीं हो सकता ना तो अगर टर्न ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम अगर रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टर्न है ना ये पूरा एक कंप्लीट सर्कल का पार्ट होगा ठीक है ऐसा सर्कल होगा और ये जो रोड है ना ये बस उस सर्कल का पार्ट है तो ये जो रेडियस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये 3 मीटर्स का जो रेडियस है वो उस सर्कल का रेडियस है एक मतलब दिस सर्कल इज एक्चुअली इमेजिनरी सर्कल इस टर्न के कर्व से या फिर इस टर्न के आर्क से हम रेडियस निकाल सकते हैं ठीक है तो ये चीज थोड़ा पता होना चाहिए तो मैंने सोचा आई शुड मेक यू अवेयर ऑफ दिस थिंग कि अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो you should be clear okay so now so will the cyclist slip while taking that turn so let's solve this question
So we discussed that for a motion on a flat road or on a level road, while taking a circular turn, friction will provide the centripetal force. भाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स के बिना वो सर्कुलर मोशन में हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से आ रहा होगा। कहाँ से आएगा? यहाँ पे और कोई तो फोर्स है नहीं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन। तो इन दिस केस फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? लेट इट डिनोटेड एफ सी एम वी स्क्वायर बाय आर। और हमारा जो फ्रिक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वी डिस्कस्ड कि यहाँ पे हम काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। बॉडी तो मूव कर रही है, साइकिल तो मूव कर रही है ना, तो उस हिसाब से हमें काइनेटिक लेना चाहिए। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने ये चीज लास्ट क्लास में प्रॉपरली क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर ये रोड है और ये हमारा कार है, मतलब मान लो हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमारी रोड है और ये कार है। ठीक है, ऐसे जा रही है, तो हम लोग इस फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला फ्रिक्शन इज काइनेटिक फ्रिक्शन। हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऐसे ऐसे लग रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द रेडियली लग रहा है, रेडियली रेडियस के डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अगर ये जैसे यहाँ पे अगर मान लो हमारा साइकिल है, ये हमारा साइकिल है राइट, तो इसके इधर पे लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियली। ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। हम काइनेटिक इस वाले काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, राइट? क्योंकि एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो इधर की तरफ लगेगा। मतलब लाइक वी डिस्कस व्हेन वी वर डिस्कसिंग द सर्कुलर मोशन इन द प्रीवियस चैप्टर, कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टैंजेंशियली, और जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जस्ट ऑपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ही जो ये साइकिल है वो बाहर की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है, so this is clear. So हाँ, static friction is always mu to n. Now again यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि ये जो static friction होता है, ये मैंने गलत लिखा है एक्सप्रेशन। दिस इज नॉट इक्वल टू, कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रखने हैं, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, बट हम क्योंकि लिमिटिंग केस के बारे में बात कर रहे हैं, लिमिटिंग मतलब कि हमें जानना है वो लिमिटिंग वेलोसिटी तब तक की साइकिल इज नॉट, द साइकिलिस्ट विल नॉट स्लिप। ठीक है, तो क्योंकि हम यहाँ पे लिमिटिंग केस के बारे में बात करें तो एफ एस मैक्सिमम जो होगा वो हमारा म्यू एन होगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में कोई और फोर्स नहीं लग रहा, एन इज इक्वल टू एम जी होगा। तो जो एफ एस मैक्सिमम होगा दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट? अब हम क्या करेंगे, लिमिटिंग केस कंसीडर करते टाइम एफ सी विल शुड बी इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे जो v होगा ये v नॉर्मल v नहीं है, ये v मैक्सिमम है, एंड इट विल कम आउट टू बी म्यू एस आर। ये ऑब्वियसली म्यू एस है सब जगह पे, क्योंकि हम स्टैटिक वाले के बारे में बात कर रहे हैं। दिस वाज अ फॉर्मूला या मैंने डिराइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, okay, so what we will do, this is the velocity maximum, we will keep the values given in the question. Under root of mu is given as 0.1, radius is 3 meters, gravity let's take it to be 9.8, and so the answer when you calculate this it will come out to be around 1.715 meter per second. What does this value mean? In simple terms, this is the maximum velocity value till which the cyclist will not slip, and when the cyclist exceeds this maximum value of the velocity, he will sleep. He will sleep and he will go away from the circle. Okay, so this is a v maximum value, and now what is given in the question is
कि जो साइक्लिस्ट है वो स्पीड कर रहा है 18 किलोमीटर पर आवर। नाउ अगेन यू हैव टू लुक एट द यूनिट्स, ठीक है। तो जस्ट नाउ मतलब सिर्फ 18 को और 1.7 को हमें कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज दिस इज इन मीटर पर सेकेंड एंड दिस 18 किलोमीटर इट इज इन किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट वील कन्वर्ट दिस 18 किलोमीटर पर आवर है ना, वी कैन राइट दिस एज 18 5 by 18, so it comes out to be 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड दे रखी है, वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 5 by 18 and the answer will be in meter per second. Okay, so हाँ, so the cyclist velocity is 5 meter per second and the v maximum velocity is 1.715। इसका मतलब है वो exceed कर गया, ठीक है, and he has not reduced his speed while cycling during taking a turn, so he has exceeded his maximum value and obviously he will slip away, ठीक है। So the question was, will the cyclist slip while taking that turn? Yes, the cyclist will slip because he has exceeded the V maximum. And this is a very practical thing. इसी वजह से I will also advise everybody to, like, whenever you take a circular turn, if you are even like if you're cycling or you are in a bike or like whatever, so you should always reduce your speed. Whichever vehicle you are driving or riding, whatever, you should always reduce the speed of that vehicle. Otherwise, it's sometimes very risky and you may also slip. Like if the even like in the rainy season also, when the roads are wet, so like the friction, friction coefficient of friction might get reduced, and the friction actual frictional force will get reduced because the water on the road. So it might be possible that you can slip away. So just you have to be careful. Now we move on to the second question. This is related to the banked road, and the question says a circular racetrack of R 300 meters is banked at an angle of 15 degree and mu value is also given as 0.2. What we have to find is we have to find the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires. Apart from that, we also have to find the maximum permissible speed, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किया था द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, ठीक है। So see, we already derived this thing in the previous lecture, so I'm not going to derive it again. I'm directly going to use the formula, but I'll explain you one thing here, that the question is asking that we have to find the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on the tires of that race car. So what does this mean? Wear and tear जो होता है, like the tires they slowly get damaged क्योंकि वो बहुत ज़्यादा speed जो race cars होते हैं ना, you must have seen in the TVs and all, you know, the race जो shows होते हैं races के, there the race cars they are actually they are being driven at a very high speed, no? So उन high speeds की वजह से those tires, you must have noticed that the race cars they have those tires, they are very special kind of tires, they are not the normal car tires that you use at your home, ठीक है। So so those special tires they are actually made up of special materials to avoid like get heated up when they are catching the very high speed. So after that also, like after being made of such good materials, after that also when these cars reach the high speed, there is some kind of dissipation in the form of heat, and so they get heated up so much, and because of friction and all, so they are these tires they get damaged. And actual also, like when the speeds are not very high also, then also no, your tires of normal cars of your family cars also, they will also get damaged from time to time, no, you will have to change them, get them changed. So that is why this wear and tear is because of friction, and there it is more quickly because of the high velocities that these people drive on. So this is
हाँ, तो what we were discussing is that when we want to avoid the wear and tear on the tires, then we are talking about a special case when the frictional force is zero. Okay, if you must remember that in the last lecture also I discussed when I was discussing this about the banned road, we also discussed when the frictional force is zero, but then what will be the velocity, and we called it V naught. So that V naught here is we are referring to avoid the wear and tear on the tires. So let me write it down. मतलब एक्चुअल में तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता ना. वी आल्सो डिस्कस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट फ्रिक्शनल फोर्स. बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्टिमम स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि हमें लिमिटिंग केस से निकालना है तो वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट टू बी जीरो. तो हम लोग सिंपली यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो रख देंगे, म्यू को जीरो रख देंगे, मतलब म्यू नॉट को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जीरो रख देंगे. एंड वी जो फॉर्मूला आया था उसमें हमने उसको म्यू नॉट को जीरो रख दिया था. एंड सो वी arrived at this formula rg tan theta. You can just go through the previous lecture and you can see it. So v naught is under root of rg tan theta. When frictional force is zero, we will simply put the values here. Radius is 300. It's 9.8. Theta is given to be 15 degrees. And so on solving, the value will come out to be 28.1 meter per second. So this is the answer for the first question, right? Now, the second part says find the maximum permissible speed to avoid slipping. We also discussed the formula, like we derived the formula for this also. I'm not doing it again. Okay, this was a formula, and when you will keep the values, whatever values you are given here, you will arrive at this answer. मतलब this is the maximum velocity. अगर आप इससे ऊपर गए, then you will slip away. Okay, then we'll move on to the third question. So here is a question which is related to a block. It says a block of mass 2 kg is attached to a string and whirled in a circular motion in a horizontal circle of radius 0.5 meters. If tension in the string is 20 Newton, find the coefficient of friction between the block and its surface. That is, I'm writing it as mu. Okay, so let me draw the diagram first. You will be able to visualize this thing. So see, there are like whenever we talk about like in the case of circular motion, whenever we say that a block is attached to a string and it is being whirled in a circle. So there are two cases actually. The first one is a horizontal circle. So the thing is that you just put your hand, just raise your hand, like just hold the other end of the string and raise your hand above and just start rotating your hand so that the stone rotates. The string with the stone rotates. So like, so then the circle जो बनेगा that would be like this way. है ना? मतलब ये आपका मान लो सेंटर है, तो ये स्ट्रिंग है. ठीक है, ये स्ट्रिंग है और इसमें ब्लॉक बंधा हुआ है. So this is the horizontal circle. The other case is the vertical one. Vertical one में क्या होता है कि जब आप vertically मतलब अगर आप ऐसे सामने से देखोगे तो ये vertical circle ही बनेगा जिसमें कि ये सेंटर है. तो और हमारा जो लाइक स्ट्रिंग होगा वो ऐसा होगा, ये ब्लॉक कभी यहाँ रहेगा कभी यहाँ रहेगा ऐसे करके. ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट पोजिशन होती है और ये बॉटम मोस्ट पोजिशन होती है. एंड यहाँ पे ये जो ब्लॉक है वो राइट और लेफ्ट है. तो इसमें जो ग्रेविटी लग रही है दैट इज ऐसा, दिस इज ग्रेविटी mg. ठीक है, so this is the case of horizontal circle and this is the case of vertical circle. ठीक है, so here the question says that it is being whirled in a horizontal circle. So we are talking about this case. Okay, now again अब body जो है circular motion में है, so the first thing it requires, the only thing that it requires is the centripetal force, right? यहाँ पे centripetal force कहाँ से आएगा, कोई, क्योंकि बॉडी मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं.
कि कार रोड पे चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा सेंट्रीपिटल देने के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो टेंशन तो होगा ही स्ट्रिंग में, बिना टेंशन के थोड़ी होगा स्ट्रिंग। तो अभी इस वाले केस में जो टेंशन है ना, दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है कि वी ऑलवेज रिक्वायर द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब वो कहाँ से आ रहा है ये हमें खुद क्वेश्चन से ढूंढना है। वी नीड टू सर्च दैट वेयर फ्रॉम वेयर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली कमिंग। देयर मस्ट बी सम अदर काइंड ऑफ फोर्स दैट इज प्रोवाइडिंग दिस, ठीक है। सो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट हैव टू सर्च दिस फोर्स, सर्च फॉर दिस फोर्स एंड जस्ट इक्वेट इट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है Fc, that is written as m into centripetal acceleration, that is mv square by r, and इस केस में जो टेंशन है वो प्रोवाइड करिए, दिस इज इक्वल टू टेंशन ना, ठीक है। अब दूसरी कहाँ से लेके आएंगे, इफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन वी हैव टू फाइंड द म्यू, ठीक है। म्यू निकालना है। अब म्यू कहाँ से आया, दैट मीन्स कि म्यू मतलब कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन लग रहा होना चाहिए ना। ये जो मैंने केस बताया ये था प्योर हॉरिजॉन्टल सर्कल वाला, जिसमें कि जो ये ब्लॉक है ये किसी सरफेस पे नहीं है, ये हवा में घूम रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो लोग म्यू पूछ रहे हैं बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं जिसके ऊपर ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसपे कि ये स्ट्रिंग भी लगी हुई है और ये ब्लॉक भी ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ऐसा होगा बाहर की तरफ, जैसे हम लोगों ने कार वाले केस में देखा था कि इट वाज व्हेन इट वाज टेकिंग सर्कुलर टर्न, तो फ्रिक्शनल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। नाउ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज, बिकॉज हम लोग लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इट इज म्यू इंटू एन। इस केस में इट इज म्यू इंटू एम जी, क्योंकि और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, इस वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू एम जी। एंड व्हेन वी विल इक्वेट दीज टू वैल्यूज लाइक दीज टू, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एंड दीज टू विल बी इक्वल, नो टेंशन इज इक्वल टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो व्हेन वी इक्वेट दिस वी विल गेट दिस म्यू टू बी v स्क्वायर बाय आर जी। लेकिन हमें क्वेश्चन में v तो दे नहीं रखा है क्योंकि हमें वेलोसिटी पता ही नहीं है। तो v स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू t बाय m, एंड सो म्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज t बाय mg। टेंशन इज गिवन एज 20 न्यूटन, mass is 2 kg and gravity is 9.8. When you solve this, you will get the answer as 1.02. So this is what? This is the value of mu. Okay. Now we'll move on to the next question. Now here the question says, let me read it down. I'll just write the information which is given in this question. I want you to listen it properly. A small block of mass m is placed on a horizontal turntable rotating with the constant angular velocity ओमेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, मतलब हॉरिजॉन्टली रखी हुई नॉर्मल टेबल है, टर्न टेबल गोल है, इट इज रोटेटिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसा लगा होगा जो कि उसको रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, दिस इज ओमेगा with some constant angular velocity omega. The coefficient of static friction between the block and the turntable is mu. ये ब्लॉक रखा है उस टर्न टेबल पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू गिवन है, ओमेगा गिवन है। What is the maximum radius from the center of the turntable at which the block can stay stationary without slipping, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी what we need to find out is the maximum radius, ठीक है, जहाँ पे हमें ब्लॉक रखना चाहिए कि अगर उस रेडियस से आगे हमने ब्लॉक रखा तो the block will not stay stationary, it will slip away from the center. So what is given, the mass m, sorry, the mass m is given, the constant angular velocity omega is given, coefficient of friction mu is given, and nothing else. Okay,
तो इस केस में क्या है, देखो पहले केस में हमने देखा उसमें टेंशन था, मतलब स्ट्रिंग था तो इस वजह से टेंशन था। अभी यहाँ पे टेंशन तो नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग नहीं है। द ब्लॉक इज सिंपली केप्ट ऑन दैट टेबल। अब इमेजिन करो हम टेबल को धीमे धीमे घुमा रहे हैं, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जब बहुत कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक क्यों बाहर जाएगा, ब्लॉक रखा रहेगा, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे व्हेन वी जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी दैट ओमेगा, वी नोटिस दैट कुछ वैल्यू ऑफ ओमेगा तक तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, अपनी प्लेस पे रहेगा, लेकिन कुछ वैल्यू ऑफ ओमेगा के बाद जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीड कर जाएगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो जो ब्लॉक होगा वो बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब ऐसे बाहर की तरफ चला जाएगा रेडियली। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो सेंट्रीपिटल ब्लॉक मूव कर रहा है ना सर्कुलर मोशन में टेबल की वजह से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, the only force here is the frictional force, ठीक है। so again in this question also the frictional force provides the centripetal force, right? तो centripetal force is again, क्यों, क्योंकि v is equals to r omega that we discussed in the circular motion. This is the centripetal force, this is the static frictional force. हमें क्या करना है, हमें इनको सिंपली इक्वल करना है, दिस इज द मैक्सिमम r, जब तक कि ये वाला जो ब्लॉक है ये बाहर के मतलब ये गिरेगा नहीं, स्लिप करके बाहर नहीं जाएगा, स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। अच्छा एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि सपोज सपोज ऐसे ही बना कोई स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड इट इज बीइंग व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था स्ट्रिंग वाला केस, कुछ उस वाले केस में भी ना एक ऐसा वेलोसिटी होता है, मतलब जो एक लिमिटिंग वेलोसिटी होता है कि जैसे साइकिल वाले केस में भी था कि अगर वेलोसिटी ऑफ द साइकिलिस्ट विल एक्सीड अ लिमिटिंग वैल्यू, विल एक्सीड अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही उसमें भी होगा कि जब पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हम स्टोन को तेजी से घुमाएंगे स्ट्रिंग को, देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्पीड अगर वो एक्सीड करती है, देन इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्ट्रिंग जो है ना उसमें बहुत ज्यादा मतलब टेंशन आए या फिर बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से टेंशन आएगा और वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि इट सडनली ब्रेक्स, द स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स, तो व्हाट विल बी द ट्रैजेक्टरी ऑफ द स्टोन, मतलब अगर मान लो ये हाथ अ, यहाँ से हम घुमा रहे हैं पकड़ के, ये सेंटर है और ऐसे करके स्टोन घूम रहा है, ठीक है, और ये ब्लॉक है, मान लो स्टोन है, तो मान लो किसी पर्टिकुलर इसी पोजीशन पे था, जब स्ट्रिंग टूट गई तो ब्लॉक का जो ट्रैजेक्टरी होगा, स्टोन का ट्रैजेक्टरी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि सी द स्टोन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये तो हमें बताया कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो होती है ना दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द स्टोन, मतलब कि अगर बॉडी यहाँ पे है तो इस वाली लाइन के टेंजेंशियल ये है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ होगी, अगर इस वाले पॉइंट पे है तो टेंजेंशियल ये है, ये वेलोसिटी वेक्टर होगा। सिमिलरली अगर वो यहाँ पे है तो अगर मतलब ऐसे हम घुमा रहे हैं ना, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो होता क्या है कि व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, क्योंकि वेलोसिटी तो उसी डायरेक्शन में है। मान लो अगर स्ट्रिंग जो है वो इस पोजीशन पे टूटी, तो हमें क्या लगता है कि होना क्या चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये बाहर ऐसे चले जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा। जब स्ट्रिंग टूटेगी तो ये टेंजेंशियली चला जाएगा, मतलब इस पोजीशन पे होगा तो ये टेंजेंशियली ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग चला जाएगा, ओके।